Hi guys, welcome back to another YouTube video. So my name is Tanya and I'm a second year BSc Adult Nursing student here in UK. तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया कि मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे on Instagram asking about my course and lots of other stuff. तो that's why I created this YouTube channel. तो अगर आपने मेरी पहली YouTube वीडियो देखी हो तो मैंने एक complete guide बनाई है that is the step-by-step process of how to get admission into BSc Nursing here in UK. But after posting that video, I realized that first of all, it was in English and most of you wanted me to make a video in Hindi. And secondly, I felt like there are some points that I should have explained better and there were some points that I missed. So that's why I'm making this YouTube video today. And secondly, इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी मेरी खुद की स्टोरी like where I come from and how I fell into nursing. तो इससे क्या होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको क्या सारी चीज़ें करनी है to get admission and like how to prepare yourself, and also you'll get to know me better जिससे I'll be able to build a better connection with you guys. तो अगर आपको लाइक एक कॉम्पैक्ट शॉर्ट गाइड चाहिए तो आप मेरी फर्स्ट यूट्यूब वीडियो जाके देख सकते हो बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो एंड इट्स लाइक एन ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इनटू BSc नर्सिंग हियर इन UK. But if you want to know things more in depth and if you want to know me, then watch this video till end. Okay, so let's start from the beginning. So guys, I'm from Jalandhar, Punjab. I was born there and I grew up there and I did my schooling from there. My childhood dream was to go into aviation. So since I was a kid, I was obsessed with aircrafts and traveling and that sort of stuff. I mean, I never thought that I would do a healthcare course or I would work in healthcare. But I'll tell you what happened and how I fell into nursing. So क्या हुआ कि मैंने अपनी 10th standard की and after 10th I decided to go for science stream because I was really interested in biology. तो मैंने क्या किया, मैंने physics, chemistry, maths और biology ये चारों subjects लिए as my major and then मैं pass out हुई. Like I finished my high school in 2020. So yes, we were COVID batch. But I don't know, for some reason, I mean, I know the reason, like I was terrible at maths. So for that reason, I dropped maths when I was in the middle of my 11th standard. And that is the biggest regret of my life. Because anyways, मैंने exams दिए भी नहीं और like मैं pass हो गई बिना exams दिए. और अगर मैं maths ले भी लेती तो they would have just passed me based on my past results and like my past grades which were brilliant. Not to brag, but I was good in academics. So मेरे past के result के basis पे like on the basis of my 10th or like whatever they did, उस basis पे वो मुझे just pass कर देते. But whatever. So when I was done with my school, I went to one of those agents or career counselors. I mean, they're not even career counselors. Those people who work for those study abroad consultancies like IDP and stuff. उनके पास मैं गई और उन्हें मैंने बोला कि मुझे एविएशन या टूरिज्म मैनेजमेंट और ऐसा कुछ कोर्स करना है. बट उन्होंने बोला कि मैं वो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने अपने स्कूल में साइंस स्ट्रीम पढ़ा है. तो अगर मैंने साइंस स्ट्रीम पढ़ी है तो मुझे अपना यूनिवर्सिटी कोर्स भी उसी से रिलेटेड करना होगा. तो अ टिप फॉर यू गाइस कि अगर आप अभी स्कूल में हो तो अपने सब्जेक्ट्स उसी अकॉर्डिंग चूज़ करो ताकि वो अलाइन करें विद वॉट एवर यूनिवर्सिटी कोर्स यू वांट टू स्टडी आफ्टर यू आर डन विद योर स्कूल इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अब्रॉड. क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि अगर आपने साइंस पढ़ी है फॉर एग्जांपल तो आप लेटर ऑन व्हेन यू आर डन विद योर स्कूल आप लॉ कर सकते हो या फिर बिजनेस कर सकते हो. यू कैन जस्ट स्विच योर स्ट्रीम. बट इफ़ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम अब्रॉड दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर वट एवर रीज़न. क्योंकि उस एजेंट ने मुझे बोला है कि अगर आप अप्लाई करोगे टू स्टडी एनी कोर्स दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू वट यू हैव स्टडीड हेयर इन इंडिया, they'll straight away reject your application. Then I was like, then what can I study? Then उसने मुझे कुछ options बताए, some courses, some of them are in healthcare, some of them were science courses like research and biomed science and stuff like that. तो नर्सिंग का क्या सीन था कि अगर आपको नर्सिंग आयरलैंड से करनी है या फिर कनाडा से करनी है तो आपके पास मैथ्स एक रिक्वायरमेंट थी कि आपने मैथ्स स्टडी किया होना चाहिए था in your higher school. So that's another reason that I'm doing nursing here from UK because यहाँ पे maths mandatory नहीं है. Then I decided कि okay, I'll go ahead and do nursing because it's a very stable profession and everything. Then I was like, fine, I'll do this. तो होता क्या है कि अगर आप इंडिया से नर्सिंग करते हो तो यू स्टडी BSc नर्सिंग और उस BSc नर्सिंग के कोर्स में जो कि 4 साल का होता है
वो आपको हर एक चीज़ पढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड, एडल्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ, तो ये सब फील्ड्स को वो कवर करते हैं इंडिया में। बट यूके में क्या है कि यहाँ पे 4 टाइप ऑफ फील्ड्स होती है नर्सिंग की, और इन चारों में से आपको कोई एक फील्ड चूज़ करनी होती है। चाइल्ड नर्सिंग, एडल्ट नर्सिंग, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो ये 4 स्पेशलाइजेशंस है, और इन चारों में से आपको एक चूज़ करके यू स्टडी इट फॉर 3 years। वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड ब्लेंडेड नर्सिंग प्रोग्राम, जिसमें आप कोई भी 2 टाइप्स ऑफ नर्सिंग चूज़ कर सकते हो और उसे पढ़ सकते हो, पर फिर आपका कोर्स होगा 4 साल का। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इन सब में से एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करके उसे स्टडी करते हैं और लेटर ऑन उसी स्पेशलिटी में काम करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को एक मिसकंसेप्शन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग करोगे तो आपकी जो पे होगी, आपकी सैलरी होगी, वो दूसरी नर्सिंग से ज़्यादा होगी। तो लेट मी क्लैरिफाई दिस कि आप कोई भी स्पेशलिटी चूज़ करके उसे पढ़ सकते हो, और वंस यू ग्रेजुएट आपको लेवल 5 जो बैंड 5 नर्सिंग पोजीशन होती है वो आपको रोल ऑफर होगा। दैट्स द स्टार्टिंग पोजीशन फॉर अ नर्स, और उसकी जो बैंड 5 नर्स की सैलरी होती है वो सबके लिए सेम होगी। तो इट डजेंट मैटर वॉट एवर स्पेशलिटी यू आर चूजिंग, योर सैलरी वुड बी द सेम वंस यू ग्रेजुएट। सो आई वुड से दैट go with whatever you feel interested in. So if you like working with children, go with child nursing. If you are interested in mental illnesses and mental conditions, go with mental health nursing. So for me, I applied for mental health nursing in Coventry University and adult nursing in Birmingham City University. हुआ क्या कि जो Coventry University ने मुझे ऑफर लेटर दिया था वो था फ्रॉम नेक्स्ट इनटेक, दैट वाज फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। बट जो BCU ने दिया था दैट वाज फ्रॉम द फॉलोइंग September. So that's why I went ahead with adult nursing from Birmingham City University. So guys, the other thing is that if you want to study nursing from UK, IELTS is mandatory and you have to have 6.5 bands with no less than 6 bands in each module. तो मैंने अपनी प्रेपरेशन की थी फॉर अ मंथ और मे बी 1.5 month, और मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था। एंड आई गॉट 8 bands इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। सो इफ़ यू गाइज वांट टू नो कि मैंने कौन कौन सी वेबसाइट्स यूज़ की थी और विच स्टडी मटेरियल आई यूज्ड, I can make a short video on IELTS preparation and how to ace your IELTS exam in your first attempt. So if you want that, just drop a comment and I'll try my best. But the thing is कि मैंने अपना IELTS exam quite late दिया था because I was really unsure and मुझे पता भी नहीं था कि मुझे नर्सिंग करनी है। बट आफ्टर वॉट ऑल हैपेंड एंड आई डिसाइडेड टू डू इट, तो इस वजह से मैंने अपना IELTS एग्ज़ाम थोड़ा लेट दिया। एंड आई थिंक आई डिड माई IELTS इन September and then I got my results in October, and then I applied for the universities in October and I applied for January intake. So for those who don't know, I know that many of the bachelor courses here in UK उनका सिर्फ एक ही intake होता है जो कि होता है September intake. But for nursing we get 2 intakes, so you can either apply for January intake or September intake. So I had applied for January intake, but हुआ क्या कि उन्होंने मुझे ऑफर लेटर भेजा and then I had to pay my fees and do all sorts of whatever the requirements were. But मैंने already late apply किया था and then winter vacations happened here and for some reason I wasn't able to meet those requirements within the set deadline, and then they deferred my intake to September. So another tip for you guys that apply as soon as you can, because nursing is very competitive course and a lot of students apply from here and then a lot of international students apply as well, and the spots fill in really quick. So just apply as soon as you can. So yes, my intake got deferred and then I had to wait for another 6 months. तो उस 6 months के period में I worked as a social media manager for one agency, and yes, the time went quick, and then I had to do my credibility interview for Birmingham City University. तो credibility interview क्या होता है कि those students who are applying for business or some other courses here in UK, उन सबको एक ही इंटरव्यू देना होता है जो कि होता है UKVI इंटरव्यू। बट जो लोग नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें 2 इंटरव्यू देने पड़ते हैं। जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है वो होता है यूनिवर्सिटी के साथ। वो जनरली जो आपकी नर्सिंग फैकल्टी होती है यूनिवर्सिटी की, उनका जो कोर्स लीड है
वो आपका इंटरव्यू लेता है और वो आपसे क्वेश्चंस पूछता है रिलेटेड टू नर्सिंग एंड ये आप कोर्स क्यों करना चाहते हो एंड लाइक दो सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। जो सेकंड इंटरव्यू होता है वो यूके इंटरव्यू होता है और उसमें इन जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो कि अबाउट योर फंडिंग होते हैं, व्हाई यू चोज यूके एंड लाइक कंट्री एंड फंडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। सो आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन credibility and UKVI interview as well, how to prepare for these and what all questions they can ask. So stay tuned for that as well. So yes, I did my credibility interview, I passed it and then I did my UKVI interview, I cleared it as well. और उसके बाद आपको कैश मिलता है। कैश डॉक्यूमेंट जब आपको मिल जाता है उसके बाद आप अपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आई अप्लाइड फॉर माई स्टूडेंट वीज़ा आफ्टर आई गॉट माई कैश एंड आई थिंक आई गॉट माई वीज़ा इन July, yeah, and then I came to UK in August 22, yeah. And yeah, I think that was pretty much it. That was my journey and my story. Thank you so much for watching till the end, and I hope it was helpful for you in some way.